Hi friends, in this session we will discuss about Dalton's atomic theory. Now Dalton's atomic theory and Dalton's postulates, you are aware about it. In 10th standard also you are having Dalton's atomic theory. Dalton's atomic theory basically deals with a few postulates. Later on, subdivision particles are available, that is electron, proton and neutron, and few assumptions becomes a wrong statement. So first of all, once again we start with the postulates of Dalton's atomic theory. Dalton proposed these postulates. First is matter consists of extremely small individual and indestructible particle called atom. So basically atom word आया है Greek word atomia. Atomia means undivisible, uncuttable और indestructible means smallest chemical constituent जिसको further cut नहीं कर सकते, that is called as atom. That is first postulate. Second, atom of the same element are identical in shape, sizes and mass. Obvious. Third, atom of this different element have different sizes, masses and chemical properties. Means carbon की chemical properties hydrogen and hydrogen की chemical properties and physical properties oxygen से match नहीं होगी. Different atom having different sizes, masses and chemical properties. Next, atom of two or more elements combined in a fixed ratio forms a compound. जैसे 1 carbon is to 1 oxygen you get carbon monoxide. 1 carbon is to 2 oxygen, that is called as carbon dioxide. Likewise, H2 plus 1 mole of O2 you get H2O, and H2 plus 2 mole of O2 you get H2O2, that is hydrogen peroxide. Atom can neither be created nor be destroyed during chemical reaction. That is law of conservation of mass. That is our first law. जो हमने previous session में discussion किया था. And last, chemical reactions involve, that is combination, separation and rearrangement of this atom. So these are the few postulates of Dalton and that is entitled as a Dalton's atomic theory. School test के अंदर ये straight away 2 या 3 मार्क में पूछ सकते हैं. So after few years there are atom subdivided into this electron, neutron and proton discoveries are there and few postulates becomes wrong, and due to this there is a limitations of Dalton's atomic theory. So Dalton's atomic theory का limitation सबसे पहले क्या आया? Explain the law of chemical combination only by mass, not by this gaseous volume. That is first limitations. Second, it does not explain why atom of this different element have different masses and sizes. Third, it does not explain how and why atom of this different element combine to form a compound. Means chemical bonding का discovery नहीं हुआ था, varieties of bond, that is covalent bond, metallic bond, hydrogen bond की discovery नहीं थी. तो कैसे दो एटम एक दूसरे के साथ जुड़ने के बाद मॉलिक्यूल बना देते हैं? जैसे सिंपल CH4 कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्डिंग था, कैसे जुड़ा? नो एक्सप्लेनेशन. Fails to explain the nature of bonding forces between this atom molecule which account for existence of this three states, that is solid, liquid and gas. Means water exists on all the three phases. So ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जो एक ही स्पीशीज को डिफरेंट 3 फेज में सब डिवाइड करती है? दैट इज सॉलिड के अंदर कुछ अलग पार्टिकल बाइंड होते हैं, या फिर लिक्विड के अंदर लोगों के बीच में बॉन्डिंग कैसी होती है और गैसेस में बॉन्डिंग क्या होती है? दे कैन नॉट बी एक्सप्लेन. एंड लास्ट, मेक्स नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड. सो दिस आर द लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थियरी. सो लेफ्ट हैंड साइड पे हमने डिस्कस किया हुआ है डाल्टन्स एटॉमिक थियरी, दैट इज पोस्टुलेट्स, एंड राइट हैंड साइड पे हमने डिस्कस किया हुआ है इट्स लिमिटेशंस. तो ये स्ट्रेट अवे दोनों साथ में भी पूछ सकते हैं. कई बार 4 मार्कर क्वेश्चन बन जाता है. एक्सप्लेन डाल्टन्स एटॉमिक थियरी, गिव इट्स लिमिटेशन. 2 मार्क फॉर योर डाल्टन एटॉमिक थियरी एंड 2 मार्क फॉर योर डाल्टन्स लिमिटेशंस. अब ये लिमिटेशन होने के बाद ये डाल्टन की एटॉमिक थियरी थी वो चेंज हो गई एंड बिकम्स अ मॉडर्न एटॉमिक थियरी. तो नाउ वी मूव ऑन टू दिस नेक्स्ट पार्ट, दैट इज मॉडर्न एटॉमिक थियरी. So let's start with this modern atomic theory. So Dalton's postulates के अंदर जो भी disadvantage थे वो overcome किए गए and finally we have a modern atomic theory. तो modern atomic theory क्या बता रही है? An atom is no longer considered as a indivisible. It is made up by this electron, proton and neutron.
जब भी डाल्टन ने ये पोस्टुलेट्स डिफाइन किए एट दैट टाइम सब एटॉमिक पार्टिकल का मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो अभी एटम कोई अकेला स्पीशीज नहीं है दैट कंप्राइजेस विद थ्री डिफरेंट स्पीशीज, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स. Atom of the same element may have a different atomic mass. Atom of same element may have different atomic mass. अब different atomic mass सर ये पता नहीं चल रहा है, तो अगर आपको पता हो तो आइसोटॉप की बात कर रहे हैं. कार्बन हैविंग 3 आइसोटॉप C12, C13, C14. सो एटम सेम है कार्बन, बट अगर एटॉमिक मासेस की बात करो तो एक का 12, एक का 13, एक का 14 हो जाएगा, तो एटॉमिक मासेस डिफरेंट हो जाएंगे. Atom of the same element that possess the different atomic masses are known as isotopes. उसी का definition यहाँ पे नीचे दिया हुआ है. Atom of this different element having the same atomic weight are known as isobar. तो दो one marker question यहाँ पे बन गए. What do you mean by isotopes? What it actually means by isobars? The ratio in which the different atom of this different elements combine may be fixed and integral but may not always be the simple. So the ratio of different atom in different element combine means दो एटम एक दूसरे के साथ जुड़ने के बाद सिंपल होल नंबर रेशियो में या फिर इंटीग्रल में भी हो सके या फिर फ्रैक्शन में भी हो सके. जैसे Al2O3 फाइन, K2S2O8, ये सभी के अंदर अगर आप देखोगे तो कुछ फ्रैक्शन इंटीग्रल भी आपको मिलेंगे. एंड लास्ट, the atom is the smallest particle that takes place into this chemical reaction. So this is all about your modern atomic theory. Modern atomic theory almost overcome all the limitations of Dalton atomic theory, and this is almost final atomic theory. So this is all about your today's session. इस सेशन के अंदर हमने दो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट पढ़े, डाल्टन्स एटॉमिक थियरी विद इट्स लिमिटेशन, एंड सेकंड हमने डिस्कशन किया मॉडर्न एटॉमिक थियरी. This is all about. So next session we'll start with the little bit numerical part. ये दो सेशन, लास्ट सेशन में आपने केमिकल लॉ सारे पढ़े, ये सेशन के अंदर आपने डाल्टन्स एटॉमिक थियरी एंड मॉडर्न एटॉमिक थियरी पढ़ा. नेक्स्ट सेशन विल डिस्कस अबाउट फ्यू न्यूमेरिकल पार्ट. So this is all about today's session. Thank you.